good evening to all. Good evening, sir. हाँ बेटा, very good evening to all. अदिति अकेले हो बेटा आप? हाँ सर. तो बेटा आज क्या स्टार्ट करें हम लोग बेटा? अपन वही कंटिन्यू करें क्या? सर कुछ भी चलेगा. नहीं थोड़ा सा वन सेकंड. चलो बेटा हम लोग लेट्स कंटिन्यू. तो देखो बेटा, हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्लास का था वो ऐसा था कुछ. मैंने बेटा एक इक्वेशन लिया था, याद है ना आपको? आई थिंक हाँ इक्वेशन क्या सर. था बेटा लास्ट क्लास का? आई थिंक एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x, सॉरी, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. अच्छा, इसका रूट्स क्या आया था बेटा? याद है आपको? इसका दो रूट्स आया था बेटा, याद करो. सर एक एक रूट्स आया था इसका -1 -√13 और एक
-1 प्लस √13। हाँ, एक आया था -1 प्लस √13 और एक -1 माइनस √13। ठीक है बेटा। और आपको मैंने बोला था कि देखो बेटा, यदि इसका सम ऑफ रूट्स करोगे मतलब SOR, तो इसका मतलब होता है सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ, आप जैसे सम ऑफ रूट्स करोगे बेटा, तो दिस इज स्लाइटली इक्वल्स टू, आप दोनों रूट्स को ऐड करो, -1 प्लस √13 और प्लस -1 माइनस √13। मैंने आपको यही बताया था। फाइनली यदि आप इसको सॉल्व करते हो बेटा, तो आप देखो √13 इज कैंसल आउट एंड यू गेट फ्रॉम हियर -2। और मैंने यहाँ पे एक बात और बोला था बेटा, पीओआर का बेटा मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो आप जब भी दोनों रूट्स को बेटा प्रोडक्ट करोगे, तो दिस इज बेटा -1 प्लस √13 और दिस इज -1 माइनस √13। तो बेसिकली बेटा वी कैन गेट -1 का स्क्वायर माइनस √13 का स्क्वायर। और तुमको फाइनली बेटा यहाँ से क्या मिलेगा? यू कैन गेट सिंपली हियर -12। अच्छा देखो, इन द सेम कंडीशन इसी वाले में बेटा, यदि मैं ऐसे बात करूं, सम ऑफ द रूट्स, इसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू -b/a। जैसे आप -b/a करोगे बेटा, तो दिस इज स्लाइटली इक्वल्स टू -2/a, मतलब -2। और यदि बात करोगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का, दिस इज अल्फा इंटू बीटा, दिस इज सिंपली इक्वल्स टू c/a। और c क्या है बेटा? आपका -12। और a कितना है बेटा? 1, दैट इज इक्वल्स टू -12। देखो, फ्रॉम हेयर यू गेट द सेम आंसर जो आपको यहाँ और यहाँ मिला था। तो आपको बेटा क्या मिला है? एकदम एग्जैक्टली सेम आंसर मिला है। क्या मिला है? एग्जैक्टली आपको सेम आंसर मिला है। तो आप बाय द वे बाय द वे शॉर्ट से जाओ या बाय द वे लॉन्ग मेथड से जाओ, यू गेट द सिंपली सेम आंसर। अब देखो, अब कंसर्न ऐसा है बेटा, मेन कंसर्न इज दैट अब जो मेन कंसर्न है, हाउ हाउ अल्फा प्लस बीटा is equal to -b/a and अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। हाउ? देख बेटा, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो कि इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a quadratic equation has two roots alpha and beta, then 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 quadratic equation in terms of roots roots। तो आपको पता है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको बेटा हम a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा तो लिख सकते हैं बेटा। डू यू नो वेरी वेल? we will write the same expression is like as the a into x minus alpha into x minus beta। Basically what we observe here beta कि simply ax square plus bx plus c is slightly equivalent to, अब you can just simplify it beta, तो what we get a into what, x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। Got it? तुम ऐसे कर सकते हो बेटा। ओके, अब देखो अब ऐसा आई थिंक, अब देखो, अब इसमें ऐसे समझना बेटा कि, है ना, अब देखो हम लोगों ने बेटा इसको तो आप अब
ऐसे समझिए इसको कि इट इज है ना। अब इस ए को ना इधर लेके आओ, ये जो ए है ना इसको इधर भेज दो बेटा, इधर लेके आओ। ए जैसे आएगा इधर बेटा तो क्या बनेगा बेटा, बताओ। ये बनेगा, ये इधर आएगा बेटा, बनेगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। गॉट इट। तो अभी यू हैव टू कंपेयर बेटा, यू हैव टू कंपेयर हियर, है ना। आप कंपेयर करना सीखो। तो मान लो बेटा यहां से क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। फाइनली बेटा व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, और अल्फा इंटू बीटा is equal to c by n. That is the beta proper appropriate method. You got simply the perfect calculations. If alpha plus beta is equals to minus b by a and alpha into beta is equals to c by a. So from here you can get the simply and exact calculations about the things. Okay, so this is the main thing. Try to understood. Okay, note it down. This is the proof and you can say proper calculations. Note it down fast beta. Okay. One more question. Question is that sum of all real values of x satisfying equation 3 raised to the power x minus 1 xx square plus 5x minus का 50 is equal to 1. So try to solve it. Try to solve this question. What's your answer, beta?
Okay, what's your answer? What is the given expression, beta? Three raised to the power x minus 1 xx square plus 5x minus 50 is equal to 1. We can simply write that as 3 raised to the power x minus 1 xx square plus 5x minus 50 is equal to, you can add simply 3 raised to the power 0. And we just compare it. Just compare it. You get simply x minus 1 xx square plus 5x minus the 50 is equal to 0. From here, you get simply x is equals to 1. Yeah, you can write simply x minus 1 is equal to 0, or 1 second. Or xx square plus 5x minus 50 is equal to 0. So basically, but you get simply here what? X is equals to 1. From here, x is equals to 1 from here, or xx square plus 5x minus 50 बराबर का 0. Finally, you get simply बेटा x plus 10 into का x minus 5 बराबर का 0. यहां से तुमको x बराबर मिलेगा बेटा 5, और क्या मिलेगा बेटा माइनस का 10. अब इससे बोला बेटा कि अब देखो तुम्हारा आंसर क्या बेटा, तुम्हारा आंसर है x इज इक्वल्स टू 1 5 और माइनस 10. क्वेश्चन इज आस्किंग सम ऑफ रियल वैल्यूज. बेटा सम कर दो. 1 plus 5 minus 10 is what? Minus का 4. This is your answer of this question. ये तुम्हारे क्वेश्चन का बेटा आंसर है. Got it? जल्दी नोट करो. बेटा any doubt? Next question. If roots of
roots of quadratic equation are 8 and -3. Find quadratic equation. Find quadratic equation. Try to solve it. One second. हाँ, do it. Fastly. Do it. Fastly बेटा, जल्दी करो. What is given beta? If the roots is given beta, roots is given, है ना? No, roots are given beta. The x is equals to 8 and x is equals to -3. These roots are given. Okay, this is simply one is beta what? One is alpha and another one is beta. Got it? So we have to find the quadratic equation. So x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Basically beta x square minus alpha is what? Alpha is 8 plus -3 into 8 plus 8 into -3. That is equals to 0. This is the way to finding the roots. So x square minus 5x minus का 24. This is equals to 0. This is equals to 0. ये आपका 0 हो गया. This is the beta correct answer. Okay. Any doubt? Next question. For quadratic equation, x square minus x minus 2 बराबर 0. Find difference of roots. आपको रूट्स का डिफरेंस फाइंड करना है. करें.
बेटा डू इट फास्टली बेटा। करिए। तो टू फाइंडिंग बेटा डिफरेंस ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा माइनस बीटा। ये तो डिफरेंस होता है बेटा। तो अल्फा माइनस बीटा को तुमको पता है ना बेटा, इसको तो मैसेज दो बेटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अरे मैंने पढ़ाया था ना बेटा बेसिक मैथ्स में, अंडर रूट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर जो होता है ना बेटा, मॉड एक्स होता है बेटा। कभी भी अंडर रूट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड एक्स, ऑलवेज इक्वल टू मॉड एक्स। अब यहां से देखो बेटा, एक क्वेश्चन पे देखो बेटा, यहां से बेटा क्या है, वन थिंग इज क्लियर बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस वन, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट बेटा, व्हाट, माइनस का टू। तो सिंपली यू कैन यूज हियर बेटा, यू कैन राइट आल्सो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा का अंडर रूट। सो दिस इज आल्सो इक्वलेंट टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस का टू, दैट इज इक्वल्स टू थ्री। हाँ, दिस इज बेटा फर्स्ट मेथड। And you can also use beta, just to remember one thing, very important. You can remember one thing beta, it's too much important for you कि अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स अल्फा बीटा। तो बेसिकली दिस इज अल्फा प्लस बीटा, बेटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स बेटा व्हाट, सी बाई ए, ओके, का अंडर रूट। तो दिस इज इक्वल्स टू बेटा बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन का ए स्क्वायर का अंडर रूट। एंड बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज डी डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज बेटा रूट डी अपॉन ए। तो फाइनली बेटा यू कैन रिमेंबर द डिफरेंस ऑफ रूट्स is equals to alpha minus beta is equals to under root 2 d upon a. This is beta also alternate formula. We can finally simply d here
एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट्स यू गेट सिंपली आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो तुम वैसे भी फाइंड कर सकते हो। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। कोई दिक्कत तो बेटा यहाँ तक नहीं है ना? बेटा यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। सब कुछ आपको समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर, हमने ये सब 10th में पढ़ लिया सर। टेंथ में पढ़ी थी बेटा ऐसा? हाँ सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 10th में भी थे, लाइक पॉलिनोमियल्स भी थे। हाँ, थोड़ा बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली आगे थोड़ा सा यूज आएगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में, और आगे कैलकुलस वगैरह में भी यूज आएगा बेटा। हम लोग अब आगे की बातें करेंगे अब। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा, आज के इतना ही, लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा।